But like my average score was around 640. So that's an easy strategy. So hi guys and मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एकदम आउट ऑफ ऐसा रेंज है. ओके. Hi guys and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. Today I have my special friend जिसको मैं पिछले एक साल से इनवाइट कर रहा था. Finally sir has opted out time for my this particular interview. He is my batchmate, he is my friend who has scored 671 in NEET 2020 and it was his first attempt. Now he'll be introducing himself and his subject-wise marks of NEET 21. Hi guys, my name is Atman Soni. I scored 355 in biology, 166 in chemistry and 150 in physics. So finally here are the set of the question that I'll be asking to Atman and अभी हम subject strategy भी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी last 1 month बचा है तो we'll be discussing about कि उसने particular last 1 month में क्या किया, क्या उसकी approach थी, how to approach in a more smarter way rather than doing lot of hard work in last 1 month. क्योंकि हम anxieties और low scores के चक्कर में बहुत wrong decision लेते हैं तो we'll dissect Atman's strategy of last 1 month. So let's start. First of all, what were the तुम्हारे पहले मार्क्स से ही चालू करते हैं कि what was the your initial test score marks in the full syllabus test जब तूने first time दिया था. Okay, so when I started giving these full syllabus tests, it was not a good score because the coaching that I was a part of, कह सकता हूँ ना, right? I was a part of Akash. हाँ. So I was a part of Akash. The tests initially were really difficult. तो मेरे ऐसे 400, 450 जैसे आते थे. Because the preparation भी तब उतनी अच्छी थी नहीं. मैं बस ऐसे देखे आ जाता था. But as they kept coming, this gradual increase हुआ. What was the highest score in Akash test series that you have gotten? Oh, during like the final test series, एक महीने पहले I got 690. Yeah. But like my average score was around 640. Akash के उसमें. Yeah. So he was a kind of a smart kid. His scores were around 640, but he has scored as a in a low phase also like 450 and 500s also. Personally, एक महीने पहले I just want to ask you कि तुमने कितने ज़्यादा टेस्ट दिए थे, तुम्हें टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस लगता है तुम्हारी प्रेपरेशन में? Oh, I think tests say it's a make or break situation. The number of tests you give is completely proportional to how much you score. And in the last month मैंने रोज एक टेस्ट दिया है. In the last actually 45-50 days मैंने रोज एक टेस्ट दिया ही है. Not saying I was prepared for all of them. I think the tests are a reason why मेरे इतने like ऐसे I started scoring well because of the tests. And मैंने सब पढ़ के नहीं रखा था before I started attempting all these tests, but as the days progressed, होते गया I guess. So that's an easy strategy. And what about the students जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, दे आर कंफ्यूज कि हमें नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा देनी चाहिए कि अभी सिलेबस कंप्लीट करें क्योंकि बिना सिलेबस कंप्लीट किए तो मार्क्स आते नहीं टेस्ट में. तो what your piece of advice on you? Oh, I'll tell them this. Attempt as many tests as you can. Syllabus गया भाड़ में. Not भाड़ में, but don't focus on studying everything. Once you start giving enough number of tests, you will realize that there are only a set number of questions that are asked from a chapter per se, and you only need to know all of that to score well. You don't need to mug up every chapter and everything. Like हमारा MBBS में भी कैसा ऐसा IMP वाला सिस्टम होता है. So once you give enough number of tests ना, you'll start to realize कि ऐसे क्वेश्चंस एक जैसे ही है. That's actually a very good point that जितने नंबर ऑफ टेस्ट आप दोगे एक आपको पर्सनली गट फीलिंग आ जाए कि इस चैप्टर से तो अब यही पूछ सकते हैं और अगर आपने PYQ भी प्रैक्टिस किया तो भी आपको आ जाएगा. अदरवाइज आप टेस्ट नहीं दोगे, यू विल बी कंफ्यूज, यू विल बी रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन, यू विल बी मेमोराइजिंग ईच एंड एवरी लाइन एंड यू विल जस्ट नॉट गेट एनी आइडिया कि मुझे एक्चुअली में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए. तो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट. द सेकंड क्वेश्चन इज, दो टेस्ट के बीच में एस्पिरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें. दो फुल सिलेबस के बीच में 1 या 2 दिन का गैप होता है तो उसमें हम पूरा क्या रिवाइज करें या वीक टॉपिक रिवाइज करें. तो व्हाट पर्सनली व्हाट यू हैव डन इन बिटवीन द 2 टेस्ट ऑफ स्पैन ऑफ 1 day और समथिंग लाइक दैट? Oh, once like ऐसे last 20-25 days में once my syllabus was चलो fairly complete, I would only study जो मैंने वो दिन के टेस्ट में गलत किया है. Okay, so let's say कि मैंने बायोलॉजी में I made a mistake in some cell के MCQs like cell cycle वाला जो whatever that chapter is, उसमें मैंने गलती की. So I'll read up that topic, जो भी mistake की है I'll read up that topic and I'll attempt the next paper. So at least जो वो mistake मैंने पहले वाले पेपर में की थी I won't repeat it.
That's why the number of tests plays a lot into this, because जितने number of tests तुम दोगे उतना you will realize कि oh ये mistake है, ये पढ़ के जाओ, ये mistake है, ये पढ़ के जाओ. You will iron out all your weak areas, and क्योंकि जो आता है वो आता है, but जो नहीं आता is what you need to focus on. So you don't need to cover everything, because there are parts that you won't know and there are parts that you do. You just need to understand what you don't know and just work on it. उसमें टाइम आई थिंक कम वेस्ट होता है. सो फाइनली ही वॉज फोकसिंग ऑन हिज वीक एरिया. जो उसको आता था वो बार बार रिवाइज नहीं करता था. जो उसका वीक एरिया था वो 2 टेस्ट के बीच में वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाता था. एंड व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ एमसीक्यूज दैट यू यूज्ड टू सॉल्व. लाइक एक पर्सनल सेल्फ स्टडी के टाइम हम जो प्रैक्टिस करते वो क्या तुमने लास्ट मंथ में बंद कर दी थी, क्योंकि तुम एवरी डे 200 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज तो दे ही रहे थे. तो एट दैट टाइम वर यू प्रैक्टिसिंग आकाश मॉड्यूल, एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू और समथिंग लाइक दैट? ओह आई थिंक PYQ मैंने सिर्फ लास्ट वीक में देखे थे. आई नो इट्स अ बैड थिंग, बट PYQ मैंने पहले देखा ही नहीं था, बिकॉज आई वाज रोज एक टेस्ट देना इज अ लॉट. रोज एक टेस्ट देना इज अ लॉट एंड इट्स वेरी टैक्सिंग. तो उसके सिवाय कुछ ऐसा दिमाग जाता ही नहीं था मेरा. बिसाइड्स दैट तो नॉट रियली, मैं बस क्वेश्चन पेपर ही अटेम्प्ट कर रहा था. PYQ देख लिया एक बार, या गुड, क्योंकि PYQ में भी वही क्वेश्चन आता है जो ये लोग टेस्ट में पूछते हैं. एक्चुअली आकाश के पेपर में होता क्या था, देयर वर लॉट्स ऑफ PYQs आल्सो इन दैट पर्टिकुलर पेपर. वो लोग वैल्यू चेंज कर देते थे. दे यूज्ड टू रिपीट दैट सेम PYQ क्वेश्चन इन एवरी ऑलमोस्ट टेस्ट पेपर, एंड ही हैज गिवन लाइक एवरी डे इन लास्ट 45 to 50 days. सो दैट इज आई थिंक मच मोर इनफ कि तुमने PYQs 2-3 बार लगाए लिए थे. व्हाट अबाउट एग्जाम्पलर? छुआ भी नहीं, सॉरी. आई वुड आल्सो लाइक टू से कि मैंने I should have attempted more question papers in my opinion, क्योंकि था टाइम बट मैं ऐसा आलस कर रहा था. एक्चुअल मेहनत मैंने एक्चुअली लास्ट 2 महीने में ही स्टार्ट की है. आई सजेस्ट लाइक डू सॉल्व 2 क्वेश्चन पेपर्स अ डे इफ इतनी एनर्जी है. जस्ट मेक श्योर यू आर लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, बट डू एज मच एज यू कैन, क्योंकि it's only going to help you. So you can just see his mindset about test series. You guys, are so much anxious to give tests. You have so much of fear of having low scores that you are actually giving 2 tests a week, which is and he's giving 2 tests a day, in a single day. So it's about how can you increase your confidence. There can be sometimes that revising so much formula and mind maps can increase your confidence rather than giving so much of test. But in his case, and there might be so many students who is watching this video, जिनको number of tests से आपका confidence बढ़ेगा. तो what can be the turning point of your NEET journey has to be decided by you and your decisions. So अगर आप टेस्ट उतने नहीं दे रहे, आपको गट फीलिंग आ रही है, जो स्टार्ट गिविंग टेस्ट, उसका इफेक्ट इसके स्कोर पे क्या हुआ वो आपको दिख ही रहा है. Let me also. One more thing is कि starting में there is a huge fear कि क्या रोज you have to prove your worth, रोज you have to prove that you know something. वो टेंशन है ना, it goes away after 5 tests because you know where you are and like this is what it is. You just keep improving yourself. So don't not attempt papers just because of the fear of it. नहीं प्रिपेयर किया होगा तो भी चलेगा. As long as you keep giving as many MCQ tests as possible, you're gonna figure out where you lie and how you need to progress from there. If you don't attempt tests, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ हैं हम. एंड एक्चुअली इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ जो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहा है, आपको अपने मार्क्स सिर्फ खुद देखना है, ज़्यादा अपने मॉम डैड को दिखाना है. इन कोचिंग लाइक आकाश वेयर ही वाज देयर वाज सो मच ऑफ कंपटीशन. एक टेस्ट के मार्क्स आएंगे, 100 बच्चों में कंपैरिजन होगा, वो टीचर्स आपस में कंपेयर करेंगे, घर जाके पेरेंट्स भी पूछते हैं तेरे उस दोस्त के कितने हैं. तो इट्स अ ह्यूज सिचुएशन दैट यू आर नॉट ऐसा फेसिंग इफ यू आर डूइंग अ सेल्फ स्टडी. तो अपने आप से तो फेस करना इज ईजी ना. तो यू कैन गिव मोर नंबर ऑफ टेस्ट अगर अकेले आप सेल्फ स्टडी प्रिपेयर कर रहे हो या आप किसी ऐसे कोचिंग में जहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन नहीं है. Now let's just talk about what about physics NCERT. Physics NCERT भी इंपॉर्टेंट है, theoretical क्वेश्चन भी आते हैं. तुमने पर्सनली लास्ट मंथ में रीड की थी या कभी भी रीड की थी या 1-2 बार रीड की थी? What was the Okay, controversial take. I never read the NCERT. Never, not once. 11th की चलो I might have read it once. वो भी ऐसे टुकड़ों में. 12th की मैंने छुई भी नहीं थी. I studied from the Akash ki modules. Okay, this is not an Akash brand deal because I've hated my experience there, but their modules they're really good because they build on the NCERT wala content only. But yeah, this is not something you'll hear pretty often. But मैंने नहीं पढ़ी NCERT, and I think it turned out fairly well. So that's where it is. That's where the whole mindset of you need to figure out what works for you. It doesn't mean that just because किसी के लिए NCERT works means that it might work for you. I know it is the last month, but if you still don't know what works for you, I think
take the time out to figure out what works for you and then give question papers or something. And you can see that उसका जो source material था उसको उस पर confident था and it was at a very authentic source material. अगर आप जिसी भी coaching में जाते हो तो trust that coaching कि आपने अब एक अच्छी coaching join की तो उसका source material काफ़ी अच्छा ही होगा. Just don't down. If you haven't joined any coaching, then I have recommended many XYZ reference book that you can like really trust on, and they have covered like NCERT, PYQ and NEET pattern questions. Just have that one authentic source जिससे आप practice कर सको. If you do like start referring to some book, I suggest you stick to it from start to finish. Do not change, ये chapter के लिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये chapter के लिए यहाँ से पढ़ रहा हूँ. That's where a lot of your confusion won't get resolved because सबकी language अलग होती है, सबका way of explanation अलग होता है. So I hope you got all of your answers so far, whatever I have asked the question. The fourth question is, last 1 month में इतना time नहीं रहता to read so much of NCERT, like P block की तो कितनी बड़ी and even biology NCERT as well. So I just want to ask you about the short note, mind maps and the formula sheet. Have you personally prepared it or referred from Akash, or you personally तुम उसी से revise करते थे कि तुम NCERT ही पढ़ते थे? Okay, so as we made it clear, NCERT तो मैं नहीं पढ़ता था. For physics, I would make formula sheets, and trust me, a formula sheet will get you very ahead in every formula sheets for physics and physical chemistry is just you only need to read from there only because theoretical यहाँ से बहुत पूछता है नहीं ये लोग. And physics के लिए make the best formula sheets ever, refer another book if it doesn't work for you. What I did was I referred from the अपनी आकाश की module, and sometimes I would look at DC Pandey if curiosity आती थी. HC वर्मा तक नहीं गए थे हम लोग cause नहीं ज़रूरत है. And just a special mention to all the questions that you personally ask in every video. What about the last 4 underrated chapters: environmental chemistry, polymers, biomolecules and chemistry in everyday life? पढ़ो, read that stuff, read it well enough that you know what that chapter is talking about. ऐसा blank नहीं होना चाहिए. You need to know what the basic shit is you know what the basics what they're trying to tell you basically और कुछ नहीं. Also one more thing about inorganic chemistry, that's the S block P block वाला DS. मत इतना stress लो. You know what I did? What I did was on the day before NEET, the only thing we didn't have a test that day. The only thing I read was inorganic chemistry के सारे SPD F block, and then I went to bed. Studied for 2 hours that day. So yeah, I went to bed at 9 p.m. But how did you revise the whole SPD of just 2 hours? उस टाइम पे तो कितना वैसे रिवाइज हो गया था. उस टाइम पे I was था दिमाग में. So that is what I say always, that multiple reading always helps to reduce your time. आप एक चैप्टर को शायद इवन सॉल्विंग में भी आपने पर्टिकुलर फिजिक्स को एक चैप्टर की एक्सरसाइज 1 घंटे लगी ना आपको, तो अगली बार करोगे तो प्रोबेबली 40 मिनट्स लगेगा, एक और बार करोगे तो 15-20 मिनट्स लगेगा. दिस ऑलवेज हैपेंस. मल्टीपल रीडिंग, मल्टीपल प्रैक्टिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट यू कैन डू एवर. इनऑर्गेनिक वीक है, लर्न नहीं हो रहा, तो उसका एक ही रीजन है, वीडियो देख के समझो और बार बार रीड करो, अपने आप सब कुछ हो ही जाएगा. And lastly, I just want to ask you any personal trick or tips that you personally followed in your end. तुझे लगता है कि इतना universally उतना so called उतना talked नहीं है, तेरी personal secret advice जो तूने last 1 month में की और तुझे actually बहुत feel हुआ progress. Okay, this is more of a mental thing. It wasn't more academic related thing. Or last month के लिए भी नहीं, it applies to whenever you start your journey. Is believe in yourself till a point where people think it's a delusion. Set expectations for yourself so high that no matter what everyone else thinks, you just need to meet that expectations for yourself. The expectation that my parents had for me is way less than what I had. They said कि 500 आएंगे चलेगा. 500, sorry. I had to raise their expectations. Go above and beyond with what you think you can do. Because chances are you're underestimating yourself. It always happens. And one more thing I would like to say is competition isn't always bad. Competition it will get you somewhere. Competition has it's always seen in a negative light, but it has a lots of positive impact in your life as well. Yeah, so I was lucky enough to have some good friends who were good rivals and competitors जिनके साथ मजा आती है, and they are in some different colleges right now. Some of them are with me at BMC. It is a good ride. It is an experience you guys will remember कि NEET खत्म हुई, उसके बाद क्या हुआ and where everyone else went, and you'll stay in touch with the good ones at least. So believe in yourself and कि मैं कर ही लूँगा, and then you set a pressure for yourself and then you have to do it, because if no one else is expecting out of
you are expecting it out of I yourself. hope you got enough, the moral thing also that believe in yourself. अगर आपको अपने आप पे बिलीव नहीं होगा then दुनिया आपको मोटिवेट करती रहेगी, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. एंड अगर आपको अपने आप पे बिलीव है तो दुनिया डीमोटिवेट करेगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा. So I hope you got enough academic ideas and moral ideas कि लास्ट उन्होंने आपका अपना mindset कैसा रखना चाहिए and how you really need to approach for last month. It's just 1 month left for NEET exam. Give your best shot and we'll meet in the next video. Before that, just if you want to give shout out to anything. Oh yeah. So I have a new podcast. It's called Optional Conversations, and I'm a host. You'll see this face really soon on there. It's a podcast where I talk about virtually anything I want. And also, by the way, for everyone who's thinking that एक साल के लिए आत्मन ने ओम को ना बोला, and now that he has something to promote, he is coming onto this channel. That's exactly what I'm doing. That's exactly what I'm doing. So अगर आपको इंटरव्यू देखने में मजा है तो उससे भी ज्यादा मजा इसके चैनल पे इसका पॉडकास्ट देख के आएगा. तो जस्ट डू चेक इट आउट हिज चैनल. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेप.